Next question. In December 2016, IPP, International Paper Packing, shares sold for about 73 pound. That is P0 is given. As per the security analysis forecast, a long-term earning growth rate of 8.5% is expected. G is provided to us 8.5%. IPP is expected to pay. Highlight the portion expected to pay. Expected to pay stands for D1 of 1 rupee, sorry, of 1.68 pound per share. A part of the question. Assuming that the dividend are expected to grow along with the earning at 8.5 percentage per year in perpetuity. So growth rate हमको दे रखा है 8.5% perpetuity के लिए. What rate of return that an investor can expect to earn? यानी कि अगर एक इन्वेस्टर ये सिक्योरिटी बाय करेगा तो उसको क्या रिटर्न मिलेगा, दैट इज अ क्वेश्चन. यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपल कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जितना कंपनी का कॉस्ट होगा उतना ही इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगा. So from this information we can calculate the cost of equity to give answer for the question. I request all of you to write down answer for the question that what must be the cost of equity. Chalo, write down answer for the question all of you. K is equal to D1 upon P0 plus C. क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको D1 दे रखा है 1.68 पाउंड. क्वेश्चन में हमको P0 दे रखा है दैट इज 73 पाउंड. उसके बाद हमको ग्रोथ रेट दे रखा है 0.085. 1.68 upon 73. So 0.0230 plus 0.0850. So 0.1080. That is 10.80%. So with paragraph write down. In this question, we have been asked that calculate return to investor. Full stop. उससे भी लिखो आगे. Cost of equity is cost to company to raise equity finance, comma, the same is return to equity shareholders. Full stop. ऐसा हम लोग समझते हैं. B part of the question. It is expected that IPP to earn, IPP is name of the company, okay, about 12% on book equity and shall retain about 50% of the earning. How these forecasts will change growth rate and cost of equity, that is the question. So I request all of you to write down answer along with me. बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि आप रिवाइज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करो. सो कैलकुलेशन ऑफ revised growth rate, it will be found as B into R.
B stands for retention ratio 0.50. R stands for the rate of earning 12 percentage. So 0.06, that is 6 percentage. ऐसा करके हमको यहाँ पे रिवाइज्ड ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ आई वांट यू टू डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा है. फॉर दैट आई गिव इन अ हिंट टू यू. So I want you to listen to that hint, then try to do answer of the cost of equity on your own and put your answer in the chat box. I am reading the question from beginning. In December 2016, IPP's shares sold for about 73 pound. So market price of the share P0 is 73 pound. As per the security analyst forecast, a long-term earning growth of 8.5% is expected. तो ग्रोथ रेट हमको दे रखा है 8.5% का. IPP is expected to pay dividend of 1.68. So D1 दे रखा है 1.68. Assuming that the dividend are expected to grow along with the earning at 8.5% in perpetuity, what rate of return an investor can expect? So K पूछा था फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, जिसका आंसर है 10.80%. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर हो गया. बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसमें ऐसा दे रखा है कि रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी इज 12%, रिटेंशन रेशियो इज 0.5. तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा? डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा अगेन 0.5. 0.5 कैसे आया? 1 माइनस 0.5, ऐसा करके. अच्छा, सो नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ग्रोथ रेट पूछा था, जो हमने कैलकुलेट कर दिया 6%. क्वेश्चन में पूछा है दैट से हाउ दीज फोरकास्ट विल चेंज ग्रोथ रेट, हो गया, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी हमको ये वैल्यू वापस कैलकुलेट करने का है. ओके, नाउ everybody is requested to pay proper attention over here. For the purpose of doing B part of the question, an assumption is made like this. Listen carefully. Company has changed its dividend payout ratio comma, with that what is revised cost of equity is supposed to be found. This is a kind of assumption that say we have to make. तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे? P0 को कॉमन ही लेंगे 73, क्योंकि हम लोग एक से ज्यादा चीज तो एक फॉर्मूला से फाइंड नहीं कर सकते. K पूछा तो हमको P0 चाहिए, तो P0 कितना लिया जाएगा? 73 लिया जाएगा. अच्छा, रेट ऑफ अर्निंग जो हमको दे रखा है उसके लिए से हम लोग ऐसा मान लेंगे कि रेट ऑफ अर्निंग हमारा पहले भी 12% था, अभी भी 12% है, एंड से देयर इज अ चेंज इन द डिविडेंड पे आउट रेशियो, और उसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या चेंज आएगा वो हमको कैलकुलेट करना है. सो दिस इज द हिंट. टेकिंग दिस हिंट इनटू अकाउंट, आई वांट यू टू आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग कैसे किया जाएगा. एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन. आई डू नॉट वांट यू टू राइट एनीथिंग. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? Calculation of B retention ratio, comma, when G was 8.5%. जब ग्रोथ रेट 8.5% था तभी रिटेंशन रेशियो क्या था? G इज इक्वल टू B इंटू R. G कितना है? 0.085. B कितना हमको मालूम नहीं है,
वही तो फाइंड करने का है। आर है 0.12, सो बी इज 0.085 divided by 0.12, so 0.7083। तो ये रिटेंशन रेशियो सबसे पहले फाइंड किया जाएगा, दैट इज 0.7083। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। अच्छा, वी अंडरस्टैंड that it is ईपीएस एंड डीपीएस। सी, हमने ऐसा फाइंड किया है कि रिटेंशन रेशियो है 0.7083, so for every 1 rupee that you earn, 1 minus 0.7083, this is what say you retain, यानी डिस्ट्रीब्यूट कितना किया जाता है 0.2917। डिविडेंड पर शेयर कितना है 1 रुपी 68 पैसे है। सो अर्निंग पर शेयर कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। सो इट इज 1 रुपी 68 पैसे into 1, that does not make a sense, divided by 0.2917, so 1.68 divided by 0.2917, that comes to 5 rupee 76 paise। So using the information in the A part of the question, हमने कैलकुलेट किया कि अर्निंग पर शेयर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, क्योंकि देखो D1 है तो D1 की इंफॉर्मेशन से जो भी हमको मिला वो क्या मिला होगा, E1 मिला होगा, दैट इज 5 रुपी 76 पैसे। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। अच्छा, नाउ हमको क्या दे रखा है, हमको रिवाइज द डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, कितना 50%। सो ये 5 रुपी 76 पैसा है, उसका हाफ क्या हो जाएगा, नया D1 हो जाएगा। सो टेकिंग इनटू अकाउंट द न्यू D1, दैट इज आई थिंक दैट 2 रुपी 88 पैसे समथिंग, हम लोग नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस आंसर द क्वेश्चन नाउ। कैलकुलेशन ऑफ न्यू D1, ये जो है कैलकुलेशन ऑफ द ईपीएस 1 है, इट इज ईपीएस इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। सो 5 रुपी 76 पैसे इंटू 0.50, 2 रुपी 88 पैसे, that is the new D1। Next, calculation of key, it is D1 upon P0 plus growth rate। What is D1? D1 is 2 rupee 88 paise, P0 is 73 और उसमें ग्रोथ रेट ऐड किया जाएगा 0.06। दैट इज द वे द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज फॉर्म। ये ग्रोथ रेट है जो हमको पूछा ही था और हमने कैलकुलेट भी किया है। सो 2.88 अपॉन 73, सो 0.0394 और 395 प्लस 0.06, so 0.0995, that is 9.95%। ऐसा करके हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का वर्किंग में रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग रिटेंशन रेशियो फाइंड कर रहे हैं व्हेन ग्रोथ रेट वाज 8.5%। यानी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है ना, उसके ऊपर से हम लोग रिटेंशन रेशियो फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में डिविडेंड पर शेयर दे रखा है 1 रुपी 68 पैसे। सो फॉर एवरी 1 रुपी दैट यू अर्न, डिविडेंड इज 29.17 पैसे।
सो फॉर डिविडेंड ऑफ 1 रुपी 68 पैसे अर्निंग पर शेयर कितना होगा 5.76। 5.76 के अर्निंग का 50% अभी हम लोग डिविडेंड पे करेंगे, दैट इज 2 रुपी 88 पैसे। K इज इक्वल टू D1/P0 प्लस G। ये नया डिविडेंड लिया, नया ग्रोथ रेट लिया और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड किया। आई रिक्वेस्ट यू टू राइट दिस ऑल्सो, हिंट ऑल्सो, बिकॉज ये हिंट के ऊपर से हमको आंसर कैसे करने का पता चलेगा कि कंपनी ने अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो चेंज किया है और उसके ऊपर से हमको नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है। क्योंकि फ्रेंड्स हमको कोई एक ही वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, मल्टीपल वेरिएबल चेंज करने से हम लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते नहीं है। तो रीजनेबली ऐसा माना जाएगा कि डिविडेंड का पे आउट रेशियो हमने चेंज किया है।